आयचे संदेशाचे नाव जावन आसा Today's topic of the message is आज का संदेश का नाम है You are clothed for his use. तुका नेसोयला ताचे कोणाक उजार जावं. You are clothed for his use. आपको पहनाया है उसको इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया. तुका आंगोस्त्र घातला तुका. You have been clothed. आपको कपड़ा पहनाया है देवाची मोहिमे पासून उजार जावं ताजे पासून. For his use. परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको इस्तेमाल होने के लिए। एकदम गरजेचें. This is very important और ये बहुत जरूरी है आमी हे जाणत जावं. for us to know this. इसे हम जानना। Without priestly dress, you cannot give praise as he needed. Hallelujah. पाद्रीपणाचे आंगोस तुझ्या लागीं ना, तुझ्या मागण्याचो येवद ताका जाय तसो भेटोंक जायना. If you are not priestly dressed, then you cannot praise him as the way he needs. अगर याजनी का वस्त्र आपके पास नहीं है, उसको जैसे भाता वैसा बलिदान आप चढ़ा नहीं सकते हैं। Hallelujah. नाजो जेस क्रिस्ता कारगा. तुका नेसोयला. You have been clothed. आपको पहनाया है। देवान आपले आंगोस तुका दिला. God has given his clothes to you. परमेश्वर ने अपना वस्त्र आपको दिया है। ते आंगोस्त्र That clothes, वो वस्त्र देव पळयता. God looks at it. परमेश्वर देखता है, देवाक दिश्टी पडटा. God can see it. परमेश्वर को दिखता है। आनी तेच आंगोस And the same clothes, और वही वस्त्र देवचार पळयता. even the devil have a look on it. शैतान भी देखता है। हालेलुया. एकदम गरजेचें. It is very important और ये बहुत जरूरी है तुम्ही जाणा जावं. for you to know आप इसे जानना। तुम्ही आंगोस नेसलोले आहात. that you are clothed. आपने वस्त्र को पहना हुआ है। तुमच्यानी मागण्याचो येवद स्वर्गीच्या बापाक भेटोंक जाता. You can offer the sacrifice of prayer to the Heavenly Father. आप प्रार्थना का बलिदान स्वर्गीय पिता को चढ़ा सकते हैं। तू मोलादीक. You are आप precious. मूल्यवान हैं। तुका विचून काढला. You have been chosen. आपको चुना है। तुझ्या भाशेन कोण ना. There's no one like you. आपके समान कोई नहीं है। हे करे सोड. And this is the truth. और ये सत्य है। तुझ्या भाशेन कोण ना. There's no one like you. आपके समान कोई नहीं तू है। स्पेशल. तू मोलादीक. अपूर्वायचो तू. You're begotten, the precious, the special. आप मूल्यवान है, आप प्रिय है। तुका विचून काढला. You are chosen. आपको चुना है। तुका नेसोयला. You are clothed आपको पहनाया है आपले पासून उजार जावं. for His use. अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया. जेस क्रिस्ता कारगा. देवाक जाय. God wants परमेश्वर को चाहिए आमी नेसलेले. for us to wear it. हम पहने ताणें दिल्ले नेसो. All the things, the clothes which He has given. उसने जो वस्त्र दिया है वो। आनी ताणें दिल्ले नेसोप आमी नेसले म्हणटकूच And the moment when we wear the clothes which God has given, उसने जो दिया है परमेश्वर ने वस्त्र, हम पहनने आमी के बाद एक उतर काडटा जेस क्रिस्ताच्या नावान. so only one word which we remove in the name of Jesus, हम एक वचन निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ते जिवे तृणार बापा मुखार पावता. it goes before the Father in the living throne. वो जीवित सिंहासन के सामने, पिता के सामने पहुंचता है। हालेलुया. हालेलुया. जेस क्रिस्ता कारगा. नाजो जेस क्रिस्ता कारगा. हे सूट घातला म्हणून म्हजे मागणे बापा मुखार पावना. Since pastor is wearing this suit, his prayer is not going before the Father. पास्टर ये सूट पहने बोल के उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचती। तुम्ही सूट घालूक ना म्हणून तुमचे मागणे पावचे ना तशें ना. And it is not in the same way that you have not worn suit that your prayer won't go near the Father. आपने सूट नहीं पहना है बोल के आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी बोल के ऐसे नहीं। आम्ही बरे बरे नेसताव हे कपडे. We wear good clothes. हम अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हे हैं। समाजाक दाखोवंक ओ आमची कुडी लिपूंक. That is for the society, to show for the society. वॉट टू क्लोज. इस संसार को दिखाने के लिए और हमारे शरीर को ढांकने के लिए। हालेलुया. पण ऑलरेडी आमकां देवान निसोयल्ले हा ताजे कपड्यान. But already God has given His clothes and we have worn it. मगर पहले से ही परमेश्वर ने अपने वस्त्र से हमें पहनाया हुआ है। हे आंगोस्त्र ना. If you do not have this clothes, अगर ये वस्त्र नहीं है तुजो मागण्याचो येवद देवाक मानवना. then your sacrifice of prayer is not pleasing unto God. आपका प्रार्थना का बलिदान परमेश्वर को नहीं भाएगा। देवान. God, परमेश्वर आमच्या सुरीच्या बापान our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता ने मोइसेसाक आनी ताचे भावाक आरोनाक एरन म्हणटा आमी तांकां हुकूम घातलेलो. God commanded Moses and his brother Aaron
परमेश्वर ने मूसा और हारून को आज्ञा दी थी, वॉशे ड्रेस वॉशे असे कपडे शिव. Such is a dress and stitch it. ऐसे ऐसे वस्त्र यानी कपड़े ड्रेस सिलाओ. मोइजेस ताचो भाव एरन वेगळे असले की Is it because Moses and his brother Aaron were the naked? क्या मूसा और उसका भाई यानी हारून क्या वो नंगे थे? ते कपडे घालताले. Yes, they used to wear clothes. हाँ, वे कपड़े पहनते थे. पण ते कपडे घालून देवाक नाका असले आपल्याक मागण्याचो येऊद भेटयल्लो. But God did not want it for them to wear that clothes and to give praise to Him. वे जो कपड़े पहनते थे उन कपड़ों के जरिए परमेश्वर को इनकी प्रार्थना के बलिदान नहीं चाहिए थी. स्पेशल देवान डिझाइन दिलो कपड्याचो. God gave a special design of those clothes. परमेश्वर ने खास करके डिजाइन दिया कपड़े का. ते कपडे घालताले. So they used to wear those clothes. वे कपड़े पहनते थे. ते मागणेत वो तुंबू हा वो आल्तार आमी म्हणटा त्या लुगारात ते वेताले And पाद्री मुंडाला नेसोन. And those priests used to wear that clothes and go before the altar. और वे यादनी कपड़े पहनकर उस वेदी के सामने जाते थे. मागण्याचो येऊद ते भेटयताले. They used to offer the sacrifice of prayer. और प्रार्थना का बलिदान वे चढ़ाते तो थे. येऊद देवाक मानवतालो. And that praise was pleasing unto God. और वो प्रार्थना का बलिदान परमेश्वर को भाता इलिझाबेथ था. ताचो घोव जॉन द बॅप्टिस्ट ताचो पाय ते कपडे घालून तो भितर वयतालो आपले रिती रिवाज म्हणजे बापाक कितें करूंक जाय ते कोत्तालो उपरांत येतालो आनी ते कपडे काडटालो. The father of John the Baptist, he used to wear that clothes and he used to do all the rituals, and after everything will get over, he used to remove the clothes and he used to roam. यूहन्ना बपतिस्मा का पिता वो कपड़ा पहनता था और प्रार्थना का बलिदान चढ़ाने के बाद फिर वापस आकर वो कपड़ा निकाल के रखता था. Hallelujah. Exodus 28 chapter verse 1 to 9. Exodus 28 chapter verse 1 to 9. निर्गमन 28 अध्याय 1 से 9 वचन. ते लुगारार Over there, उस जगह पर आमकां दिश्टी पडटा. we can see हमें दिखता है देव तांकां कशे कशे कपडे शिवंक लायता. that God instructs them to stitch clothes in this way. परमेश्वर उनको कैसे कैसे कपड़े सिलाने के लिए लगाता है. ताचे मोहिमेपासून उजार जाऊ ते कपडे. For those clothes to be used for His glory. वे कपड़े उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए. तशेंच जावंक जाय आसले. And the same should have been done. और वैसे ही होना चाहिए था. आनी तशेंच ते शिवताले. And they used to stitch in the same manner. और वैसे ही वे सीते थे. Hallelujah. जेजू ख्रिस्त साकारगा. जेजू ख्रिस्त साकारगा. इतलेंय करूनूय Even after doing so. इतना करने के बावजूद ते कपडे कित्याक फायद्याक पडोंक ना जाले. But there was no use of those clothes. मगर वे कपड़े किसी लाभ के नहीं हुए. सगळे ते कपडे घालूनूय ते पाद्री मरताले. Even after wearing those clothes, the priests they used to die. वे कपड़े पहनने के बावजूद यादनिक मरने लगे. हालेलुया. मन ना तसलो पाद्री येयलो. A priest who will never die, that priest came. जो नहीं मर सकता वैसा यादनिक आया. पाद्रीपणूय ताणें केलें आनी येवदूय ताणें भेटयलो. He fulfilled his priesthood and he gave the sacrifice. उसने यादनिकता भी की और बलिदान भी चढ़ाया. ताणें कसले कपडे घातलेले. So what type of clothes did he wear? उसने कैसे कपड़े पहने थे. आरोन आमी म्हणटा थोडा आरोन ओ एरन एकूच म्हणटा ते कपडे घातलेले जेजून. Did he put that kind of clothes? क्या यीशु ने ऐसे जेजून कपडे घातले पवित्रकायेचे कपडे. Jesus had worn the clothes of holiness. यीशु ने कपड़े पहने थे पवित्रता की. ही पवित्रकाय तुका म्हाका क्रिस्तास हवे आमकां बापान दिल्या. And this holiness through Christ Jesus, Abba Father has given it to you and me. ये पवित्रता आपको मुझे मसीह के अंदर परमेश्वर पिता ने दिया है. जे दिसाक The day when जिस दिन जे क्रिस्तावर आमी आयकल्ले. when we heard about Jesus Christ यीशु मसीह के ऊपर हमने सुना था आमी सत मानले. and we believed on it, और हमने विश्वास किया था. तेच दिसाक the same very moment उसी दिन पवित्रकाय आमचेर देवली. the Holy Spirit descended upon us. पवित्रता यानी पवित्र आत्मा हम पे उतरा. एफिशियन 1:13 त्या लुगारार आमकां मेवता. एफिसियन्स पहला अध्याय 13 वचन ये हमें वहां पर मिलता है. We get in Ephesians chapter 1 verse 13. देवाचो उतर सांगता. The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है तुका म्हाका आमकां बावरजांक that you and I, all of us believers, आपको मुझे हमें विश्वासियों को तू पवित्रकाय ओ पाद्रीचे कुळांतलो तू आनी हांव. that you and I are from those priesthood. आप और मैं यादनिक के गोत्र के हैं. हालेलुया. जर कसले कपडे आमी घातल्यात. So which clothes have we worn? तो फिर कौन से कपड़े हमने पहने हैं. जे ख्रिस्ताक आमी नेसले आहात.
We have worn Jesus Christ. यीशु मसीह को हमने पहना है. 예, 제수 크리스탁 포커스릭서 바 벌였다. Only the Abba Father looks at the Jesus. इस यीशु मसीह को सिर्फ स्वर्गीय पिता ही देखता है. 예, 제수 크리스탁 소이탄 딸에 비했다. The devil is really afraid of this Jesus. इस यीशु मसीह को तुरंत शैतान डरता है. 예, कपड्या वरवी आम्ही बापाक मागण्याचं येऊत भेटूंक जाता. And through this clothes we can give sacrifice of prayers to the Father. इस कपड़े के जरिए हम पिता को बलिदान चढ़ा सकते हैं. पवित्र प्रार्थना. पुस्तक तुझ्या वयल्यान कितें सांगता? What is the Holy Bible saying about you? बाइबल आपके ऊपर क्या कहता है? 1 Peter पहला पत्रस 2 chapter दूसरा अध्याय verse 9 and 10. 9 और 10 वचन. 1 Peter पहला पत्रस 2 chapter दूसरा अध्याय verse 9 and 10. 9 और 10 वचन. सिस्टर वाचून दाखव. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, 아멘. that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. You may, it is nice word. You may declare praises. You, not anybody else, not somebody else. Because you are chosen one. 보통 वाचून दाखव sister. But you are a chosen people, 아멘. a royal priesthood. royal. Amen. royal. 마길. A holy nation, 아, a people belonging to God, that you may declare the praises of him. who? Who We called- can declare. We. 아멘. It is we. हम Who called you out of darkness into his wonderful light. Jesus. 10. Once you were not a people, 아, But 내가 now- 그렇지. but now you are the people of God. ऐका स्टॉप का. people, the people. म्हळ्यार कितें? जायत्या लोकांमदलो. जायत्या लोकांमध्ये आम्ही काळकोन आसले. आम्ही काळकोन आसले. सगळ्या लोकां बरोबर तांच्या भाशेन आम्ही आसले. काळकोन. हे म्हळ्यार सगळे जायते तांच्या भितर आसले. First it says a people. So a people means we were in the darkness along with those people. अ पीपल यानी हम अंधेरे में थे, यानी जो अंधेरे में लोग हैं उनके साथ थे. आता काळोखातून उजवाड काढला म्हणतकच Since we have been brought from darkness to the light, अब अंधेरे में से प्रकाश में लाया है. आम्ही तांच्या भाशेन तांतले इतलो नाही. ये ना तिका द घातला म्हणजे स्पेशल. हालेलुया. now we are not from there. It does not say a, but the people. It means we are precious. अब हम उनके जैसा नहीं, अ नहीं, द डाला गया है. You are special. You are chosen one. You are royal priesthood. हा. जेजू ख्रिस्त साकारगा. कुशार गायची खबर. A thing of happiness. ये खुशी की बात है. कंटिन्यू कर. And now you are the people of God. आमेन. Once you have not received mercy, हा. but now you have received mercy. जेजू ख्रिस्त साकारगा. कोंकणी वाचूय. पेद्रूचे पहिले पोत्र 22 वोळ 9 आणि 10. 9. पूण तुम्ही देवान विचून काढलोले खूल, तुम्ही त्याच देवा रायाचे याज्ञिक, तुम्ही ए स्टॉप. याज्ञिक कितें जाणा? याज्ञिक म्हळ्यार कितें सांगात? पाद्री. याज्ञिक म्हळ्यार प्रिस्ट. Meaning of it is priest. ए डिक्लेरेशन येयलें म्हणटकच खंय हा रे लोब? आहा. दाखयता लोब खंय हा तो दाखयता. जेजू ख्रिस्त साकारगा. कंटिन्यू कर सिस्टर. तुम्ही देवाचे सेवेक संस्कारलोले राष्ट्र, जेजू ख्रिस्त साकारगा. तुम्ही देवान आपली करून घेतलोली पोरजा, ताणेच तुमकां पातकांच्या काळोखांतली भायर काडून येस लॉर्ड. आपल्या मोहिमे बोरीत उजवाडाक पावयल्यात. आमेन. तुमचे खातीर आपणे केल्ली ओजेपांची कर्तुत्वां तुम्ही वाकांचे खातीर देवान तुमकां विचून काडल्यात. 10. आदी तुम्ही देवाची पोरजा न्हय आसल्यात, पूण आतां तुम्ही ताची पोरजा जाल्यात. आमेन. आदी तुमकां देवाची काकळूत मेळूंक नासली, पूण आतां तुमकां ताची काकळूत मेळ्ळ्या. जेजू ख्रिस्त साकारगा.
विचून काढल्यात We are chosen चुना है हम मागण्याचो येवद भेटूंक to offer the sacrifice of prayer. प्रार्थना का बलिदान चढ़ाने के लिए पाद्री आमकां केल्यात We have been made priest. याजक हमें बनाया है पाद्री केले कपडे खूंय आहा So now you are made the priest. Where are your dresses? याजक बना है तो वस्त्र कहाँ है कपडे ताणें आमकां दिल्यात He has given us clothes. उसने वस्त्र भी हमें दिया है ऑलरेडी ताणें आमकां न्हेसोयला Already He has clothed us. उसने हमें पहले से ही यानी पहनाया हुआ आनी है हे कपडे आहा म्हणटकूच So when you have this clothes, ये वस्त्र है इसका आमी मतलब मागण्याचो येवद भेटूंक जाता so we can offer the sacrifice of praise. हम प्रार्थना का बलिदान चढ़ा सकते हैं आमी सदांच ते कपडे घालून भोंवता So always we roam with those clothes. हम हमेशा वो कपड़ा पहन के घूमते हैं ताकाच लागून आमी जैत जाता And that is why we are victorious. इसीलिए हम विजयी होते हैं झूज आहा Yes, there is a war. वहां पर लड़ाई है पूण विक्ट्री आमकां But the victory is to us. मगर विजयी हमें है जेजू क्रिस्त साकार गा Ephesians 6 chapter verse 10 to 12 Ephesians 6 chapter verse 10 to 12 what Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. 10. Finally, be strong in the Lord ah and in his mighty power. 11. Put on the full armor of God ah so that you can take your stand against the devil's schemes. 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. amen झाले 10 to 12 झाले ना जेजू क्रिस्त कोंकणी वाचना खंय एफेसकारांक पावलुचें पोत्र अविस्वोर सो वोल 10 ते 12 दा शेकी सोमिया सोवे ताचे पोदवेच्या बोलान तुमी गोट रावात 11 देंवचाराच्या सगळ्या मांडण्यांचेर जोयत व्हरूंक देवान दिल्ले झुजाचे अंतरान घालून रावात 12 कित्याक म्हळ्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमचें झूज ना पूण पोरदना लागीं अधिकाऱ्या कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराच्या राजकारभार चलयतल्या लागीं अंत्रोलार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज amen खोटे आत्मे अत्रोल म्हणजे इनस कोणच काय Ephesians 2:2 वाऱ्यालो आत्मो कोण सैतान वाऱ्याचेर आसता आ ताजे लायक झूज करूंक जाय तो वाऱ्यावलो झू झू करून घरान घुसता जेजू क्रिस्त साकार काम ताकाच लागून देवान आंगो आसले पाद्रीक ओल्ड कॉरराक And that is why God gave clothes to the priest in the Old Testament. इसीलिए परमेश्वर ने वस्त्र दिया था याजक को पुराने नियम में ते आंगो आसतना सैतानाच्यान ताका अटॅक करूंक जायनासलो So the moment when they used to wear this clothes, the devil could not attack them. और जब वो वस्त्र रहते शैतान यानी लड़ने छू नहीं सकता था ते आंगो घातले म्हणून सैतान कुशीन आनी मागीर ताजे इजिली देवाक येवद भेटूंक जातालो So when the moment when they used to wear those clothes, the devil will go from there, and then they used to offer the sacrifice of prayers. और जब वो वस्त्र रहते शैतान वहां से दूर चले जाते और प्रार्थना का बलिदान आसानी से चढ़ा ते सकते थे। आंगोस घातले म्हणून ते आंगोस आनी देव एक जातालो So the moment when they put those clothes, that cloth and God used to be one. और जब वो वस्त्र पहनते तब वे और परमेश्वर एक होते हैं। आता कितें सांगलां Now what does it say? और क्या कहा है? सुरवात एक आमी वाचलां आमकां विचून काडला आमी रॉयल प्रिस्टहूडांतले वय हो ना First we read that we are chosen and we are the royal priesthood. और हमें पहले पढ़ा है कि हम चुने गए हैं और रॉयल प्रीस्ट के हैं। आता आमर ऑफ गॉड आमी आंगोस न्हेसलां And now we have put on the armor of God और हम परमेश्वर के वस्त्र को पहने हुए झूज करूंक to wage a war. लड़ने के लिए। या आडकुले हाडटा बापाक आमकां येवद भेटूंक आडकुले हाडटा ताजे झूज करूंक The one who brings a block for does not give us to worship the Father to fight against him. जो रुकावट लाता है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए उससे लड़ने के लिए। आनी सेकंड मागण्याचो येवद भेटूंक And second, to offer the sacrifice of prayer. और दूसरा प्रार्थना का बलिदान चढ़ाने के लिए। हालेलुया आमकां न्हेसोयल्या ताणें He has clothed us. उसने हमें वस्त्र से पहनाया। हालेलुया जेजू क्रिस्त साकार गांव Ephesians 6 chapter verse 18 एफिसियन 6 अध्याय 18 वचन। Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and keep on praying for all the saints.
हालेलुया. किती सांगला What is said? क्या कहा है? तू आता तयार हा मागण्याचं येऊत भेटून Now you are ready to offer the sacrifice of prayer. अब आप तैयार है प्रार्थना का बलिदान जसं चढ़ाने के लिए? वत्मी गोदा तुका अंगवस्त्र नेसोयला वत्मी गोदा तू मागणे कर. In the form of spirit, you have been clothed with those clothes. In the same way, in the form of spirit, you give that prayer. जैसे आपको आत्मा के जरिए यानी वस्त्र को पहनाया वैसे ही आत्मा के जरिए आप प्रार्थना का बलिदान चढ़ाओ. कुयचे खुर्सा उडान कुयचे मूर्ती उडान तिमी काढची गरज ना. तू अंगोस वत्म्याच्या अंगोस नेसला त्या अंगोस्त्राप्रमाणे वत्म्यान देवा कारगंदी. There is no need to kneel down before any cross and to give your prayer, but you have worn the clothes of spirit. In the same way, you offer the sacrifice in spirit. हालेलुया. जेस ख्रिस्त कारगा तुझे मागणे पावता स्वर्गार. Your prayer, it reaches in heaven. आपका प्रार्थना पहुंचता है स्वर्ग तुका में. नेसोयला पवित्रकायेन. You are already clothed in holiness. आपको पहनाया है पवित्रता से. सगळे तुझ्या हातान दिल्ले हा. Everything is given in your hand. सब आपके हाथ में दिया गया है. हालेलुया. जेस ख्रिस्त कारगा ना जो जेस ख्रिस्त कारगा एकदम गरजेचे. It is very important. और ये बहुत जरूरी है. एकदम गरजेचे आहे आम्ही जणत जाऊ. For it is very important for us to know this और इससे जानना बहुत जरूरी है. हम खंयच्याय टायमार at any time. किसी समय कोणूय तुमका Whoever to you कोई भी आपको मागणे करूंक लायत is asked for prayers, प्रार्थना मांगे केन्ना चिती नाका. never think कभी मत सोचो म्हजे मागणे पावना. that my prayer is not answered. मेरा प्रार्थना नहीं पहुंचता बोल के. तू नेसलाय. You are already clothed. आपने पहना है. तुका नेसोयलाय. You have been clothed. आपको पहनाया गया उबो है. राव वत्म्यान. You stand up in spirit. आप खड़े हो जाओ आत्मा जेस से. ख्रिस्ताच्या नावान सुरू कर. In the name of Jesus Christ, you start. यीशु मसीह के नाम से शुरू करो. त्या लुगार देवाची पदवी दिसती पडटली. At that place, the power of God will be shown. उस जगह पर परमेश्वर की सामर्थ दिखेगी. आमच्या भयणीन आमकां कितें गोमला त्या टेस्टमनी दिल्या. Our sister, whatever she thought, she gave a testimony. हमारे बहन ने गवाही दी कि जो उनको हुआ है वो. हे भयणीन म्हाका एका कॅन्सर जाल्ल्या एका मनशा फुड्यान मागणें करूंक वयल्लो. This sister took a pastor towards a person who was suffering from cancer. इस बहन ने हमारे पास को जो इससे कैंसर हुआ था वहाँ पर प्रार्थना के लिए ले गई थी. त्या लुगार आमी गॉस्पल प्रीच केलो. At that place, pastor proclaimed the gospel. उस जगह पास ने शुभ वर्तमान प्रचार किया. तांकां हांवें सांगलें कोण देव पळयतो. Then pastor told them that who is God. और पास्टर उनको बताया परमेश्वर कौन है वो. आनी तांच्या लागीं विचारलें हे तुमचे देवा तांच्या वर हांवें शिकोवन दिली. And pastor asked them or gave them the teaching about their gods. और पास्टर उनके भगवान के ऊपर भी शिक्षा दी. आनी उपरांत आमी मागणें केलें. And then pastor prayed. और बाद में हमारे पास ने उसके लिए आनी प्रार्थना हांव की. मागणें करता आसतना दोन स्पीड टाकून सुटोन गेले. And when pastor was praying, two spirits left him and they went. और जब हमारे पास उसके लिए प्रार्थना करे दो अशुद्ध आत्माएं छोड़कर उसे चले गई. हांवें म्हज्या टिमीक म्हजे भयण तांच्या लागीं उलयलें म्हाका अशें अशें देवान दाखयलां. And then very moment pastor told their team. अब पास्टर यानी तुरंत यानी भाई बहनों से कहा कि यानी परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे दिखाया आनी है. त्याच टायमार ताणें गोवायक दिली म्हजे भितर कितें केलां म्हूण. And the same moment, that person who was suffering from cancer, he testified that yes, something left me and he went. और उसी समय जिसे कैंसर था वो इंसान कहने लगे मेरे अंदर से कुछ चले गया है. तूं नेसलेलो आहा. You are already clothed आप पहना हुआ है. ताका उजार जावंक. for his use. उसको इस्तेमाल होने के लिए. स्वर्गीचे बापाक उजार जावंक तूं नेसलेलो आहा. You are already clothed for his use, that is heavenly Father. उसको इस्तेमाल होने के लिए आप पहने हुए हैं. तुजें काम मागण्याचो येऊत भेटोवचें. It is your work to offer the sacrifice of prayer. आपका काम प्रार्थना का बलिदान चढ़ाना. आयकता तो मनीस सत मानता तो जिवीत घेतलो. The person who listens to it, if he believes, and he will receive life. सुनने वाला इंसान विश्वास करेगा तो जीवन पाएगा. सत मानप गरजेचें. Believeness, it is a must. विश्वास करना बहुत जरूरी है. तुमी सत मानात. You believe आप विश्वास करो. तुका ऑलरेडी नेसोयल्लो आहा. that you are already clothed. आपको पहले से पहनाया है. खरेंच म्हज्या भाव भयणींनो. Truly, my dear brothers and sisters, सत्य मेरे प्यारे भाई तुका बहन. नेसोयल्लो आहा. you are already clothed. आपको पहनाया हुआ है कपड़े से. तुज्यानी मागण्याचो येऊत भेटोवंक जाता. You can offer the prayer. आपका प्रार्थना का बलिदान चढ़ा सकते हैं. कसो? How? कैसे? सिस्टर कोंकणी वाचून दाखय. आतांच इंग्लिशीन वाचून दाखला. सप्लिकेशन इन अ स्पिरिट. एफेसकारांक पावलुचें पत्र अविस्वोर सो वोल ओटरा आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणे आणि विनवणी करा. सगळे समयार म्हळ्यार सगळे वेळार. At all times. हर समय. बरें तुज्या जिवितान आसो
वाईट तुझ्या जिवितान असो, They may be good in your life or bad in your life. आपके जीवन में बुरा हो या अच्छा हो, मगर प्रार्थना का बलिदान चढ़ाओ सगळ्या टायमार At all times, हर समय मागण्याचो येऊद भेटोय you offer the sacrifice of prayer. प्रार्थना का बलिदान चढ़ाओ इन अ स्पिरिट, आत्म्याच्या रूपान. It is supplication in spirit. आत्मा के रूप में. आत्म्याच्या रूपान म्हणल्यार कितें, तुवें कितें आयकलां उतर तेंच उतर यूज करप. In spirit, what does it mean? The word which you heard, to use the same word. आत्मा के रूप में यानी क्या है, जो कुछ वचन आपने सुना है वैसे यानी उसी के अनुसार धन्यवाद या प्रार्थना करना. वर्ड इज अ स्पिरिट. मागणें म्हणजे कितें, What is the meaning of prayer? प्रार्थना का मतलब क्या है? तुझ्या जिवितान ताचो उडगास करप, तुझ्या फॅमिलीचो, भावाचो, भयणीचो. That is remembering your family, that is your brother and sister in your life. आपके जीवन में यानी आपके भाई और बहनों को याद करना. जर तूं उडगास करता, The moment when you remember them, जब आप याद करते हैं तुका गमतलें हांव जेवता, म्हजी भयण जेवल्या, म्हजो भाव जेवला, जेयता वो जेवना, न्हेसता वो न्हेसना. ऑटोमॅटीक उडगास जर करी तुका सगळें, तूं कितें जेवता आसतना तुका उडगास येता. म्हजो भाव जेवता वो जेयना, ताचे घरान जेवणा वो जेवण ना, ओय हो ना. आहा, वो मोग आमचे सगळें आसोंक जाय. so the moment when you remember, you come to know when you eat whether my brother is eating or whether my sister is eating or no, whether he is wearing or no. So when you remember, you come to know this, and this is that love. और जब आप याद करते हैं भोजन के लिए बैठे तो मेरा भाई बहन खाना खाए हैं या नहीं, पहने हैं कि नहीं, तो ये प्रेम हमारे बीच में होना चाहिए. सगळे अशें करूंक लागले म्हणटकूच So when all will start doing this, कितें जातलें, what will happen? क्या होगा? देवाचे पदी चड चड देंवतली. The more and more the power of God will come down, परमेश्वर की सामर्थ ज्यादा से ज्यादा उतरेगी आनी सगळे भावाची फायराचे जातले. and all believers will be filled with fire. और सब विश्वासी आग से भर जाएंगे. तेन्ना संसाराचेर आमी अधिकार चलयतले. And then we will rule over this world. तब संसार पे हम अधिकार चलाएंगे. आमी कितें करता तें फायनल जातलें. Whatever we do, it will be final. जो कुछ हम करेंगे वो आखिरी होगा. पवित्र आत्मा साधनूय. The Holy Spirit, it is not ordinary. पवित्र आत्मा एक साधारण नहीं है. हालेलुया. जेजू क्रिस्ता कारगा, नाजो जेजू क्रिस्ता कारगा. जेन्ना तूं जोय जाता, The moment when you are victorious, जब आप विजयी होते हैं देव तुका धवे कपडे दिता. so God gives you new clothes. परमेश्वर आपको सफेद वस्त्र देता है. आनी तूं तसोच रावत जाल्यार And if you remain in the same place, अगर आप वैसे ही रहोगे तो तुजें जिवितावलें बुकाचें नांव तो काडिना. then He shall not blot out your name from the book of life. आपका नाम जीवन की किताब से नहीं हटाएगा. हे आमकां मेवता रेवलेशन 3 चॅप्टर वर्स 5. And we get it in Revelation chapter 3, verse 5. ये हमें मिलता है प्रकटीकरण 3 अध्याय 5 वचन में. सो आमी ऑलरेडी न्हेसलोले आसा. So already we are clothed. तो फिर हम पहने हुए हैं. कितें करूंक जाय. What must we do? क्या करना है? रेवलेशन 16 चॅप्टर वर्स 15 वर्स. प्रकटीकरण 16 अध्याय 15 वचन. What? Revelations chapter 16, verse 15. Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. हालेलुया. जेजू क्रिस्ता कारगा. खंयच्याय कपड्याची खबर करता. About which cloth is He talking? कौन से कपड़े के बारे में कहता है? आमी न्हेसल्या त्या कपड्याची खबर करिना जेजू. Not about the clothes which we are wearing now. जो हम कपड़े पहने उस बारे में नहीं कहता यीशु. ते लोक विंगळेपण, नेकेड विंगळेपण उलयता तो. Over there He speaks about naked. और वहां पर नंगेपन के ऊपर कहता है. ऐकात. Listen, सुनो, आमी कितलेय न्हेसो, as much as we want, we may wear. हम कितना भी पहने, देवा मुखार आमी नेकेड. But before God, we are naked. परमेश्वर के सामने हम नंगे हैं. एक आमकां मुखार एक कपडे आमची कुडली पळयता, पूण देवा मुखार चलोना एक कपडे. देवा मुखार फकत ताणें दिल्ले कपडेच. Before one another, we hide ourselves by putting on these clothes, but this will not hide ourselves before the Father. Only the clothes which we wear, which He has given us. हम एक दूसरों के सामने इस वस्त्र से यानी अपने शरीर को ढांकते हैं, मगर इस वस्त्र के जरिए परमेश्वर के सामने नहीं ढांक सकते, मगर वो जो वस्त्र दिया है वही उसी से हम ढांक सकते हैं अपना शरीर. हालेलुया. कितें उलयला. What is said? क्या कहा है? कोणा भाशेन Like whom? किसके समान? येतलो. Like whom will He come? वाचून दाखय. पोतून दाखय. वाच. ऐकात. Behold, I come like a thief. Blessed is ऐकात he. आं. जायते लागून मिस्टेक जाता. हांव चोर म्हणोंक ना देव. लायक LIK लायक. चोर आ भाशेन. चोर न्हय. जायते लोक मिस्टेक करता. लायक भाशेन. चोर आ भाशेन.
केन्ना जेजू चक्कन तुझ्या मुखार जायत सांगोंक जायना तूं कपडे सांबाळून दवर You keep your clothes with you. You do not know when Jesus may appear before you. आप अपने वस्त्र को संभाल के रखो, कब यीशु आपके सम्मुख आएगा आपको मालूम नहीं। हाले हांव मन बदलतलो आनी जेजू घेतलो ना 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 हांव ह्या आयज जायते पात करतलो हाले हांव बोगसोडे मागतलो ना सगळे वेळार सगळे सोदेर कपडे न्हेसळलो आहा ते गोड दवर You may say, today I will sin and tomorrow I will ask forgiveness. No, no, no. And every time, all the moment, wear on the clothes and keep it. और हर आज कहोगे कि मैं आज पाप करूंगा कल क्षमा मांगूंगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। हर समय हर वक्त आपने को जो वस्त्र मिला है उसे संभाल के रखो। बात जुआमाक प्रकाश सौनी 16 वोळ 15 पोलयात हांव एका चोरा पोरी येता जागृत रावतात आनी आपली वस्त्रां राखतात ती सुबागी ह्या भाशेन ती विंगली भोंवची नात आनी लोकां मुखार तांकां लॉज भोगची ना कितले बावटी लोजेक पडला जाणा तुम्ही Do you know how many people they fell into shame? कितलो अनबावटो लोक उलयता बावट्या वयर तुमकां खबर आहा Do you know so many unbelievers speak about believers? क्या आप जानते हैं अनविश्वासी विश्वासी के ऊपर कितने कहते हैं? पळय ताजो घोव कितें जाला तो पळय ताची बायल कितें जाल्या ती पळय ताची भुरगीं कितें जाल्या ती पळय 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 अनबावटी उलयता The unbelievers see what happened to his husband or what happened to her wife, all those things. अनविश्वासी बोलते हैं देखो उस विश्वासी यानी उसके पति का, बीवी का, बच्चे का क्या हुआ है। जेजू तेच सांगता ह्या लुगारार The same Jesus is saying over here. और यीशु भी यहाँ पर यही कहता है, समाजा मुखार लोजीक तूं पड नाका You do not fall into shame before this society. लोगों के सामने आप लज्जित न गिरो। ही लायन ऑफ जुडा चर्च तुमकां मारून मारून कित्याक मुखार वता Why is this Lion of Judah church is beating you and taking you forward? लाइन ऑफ जुडा कलीसिया आपको मार मार के आगे क्यों ले जाती? तुमचेर आनी तुमच्या घराचेर कोणाचेर बोटांक दाखोवंक जायना तोशी हांव तुमकां शिकयतां Pastor is teaching you in such a way that no man can point out on you and your family. पास्टर आपको ऐसी शिक्षा देखते हैं कि कोई अनविश्वासी आपके ऊपर, आपके परिवार पर उंगली न दिखा सके। हालेलुया तुमचो घराबो तुमचे जिवीत तुमची फॅमिली चक चक चकयत जायत वचोंक जाय Your life, your family must shine. आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार चमकते चमकते जाना एक चाहिए। गोट मोतीन दवरात Keep this in your mind. इसे घट मन में तुम्ही रखो। नेसलोले आहात You're already clothed. आप पहने हुए ताका कपड़े, उजा जाता तशे For his use, उसको इस्तेमाल होते हैं वैसे उलोयत रावात you just go on speaking. बोलते रहो। पॉझिटिव्ह बरें तेच उलोयात You speak whatever is positive. सकारात्मक जो अच्छा है वही बोलते रहो। उलोयत राव You just go on speaking. बोलते रहो, फाटी पळय नाका Do not turn back and see. पीछे मुड़ के मत देखो, उलोयत वच Just go on speaking. बोलते जाओ। पूण सत्य मानून उलोय But believe and then speak. और विश्वास करके बोलो। सगळी पदवी म्हाका आहा That all powers, I have it. सब सामर्थ मुझे है, हांव उलोयतां I speak it. मैं बोलता हूँ। जेजूच्या नांवान हांव उलोयतां I speak in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं बोलता या हूँ। उलोयत वच So go on speaking this. बोलते ही जाओ, उलोयत वच You go on speaking. बोलते जाओ। नवेपण दिश्टी पडटलें You will see newness. नया दिखेगा आपको, तन्नेपण येतलें You will be young. नवेपण येतलें Newness will come in you. एक नयापन आएगा आपको। उलोयत वच You just go on speaking. बोलते जाओ, बेसांव दिश्टी पडोंक लागतली You will start seeing your blessing. आशीष दिखने लगेगा। मध्येच काळे खूब येतलें And then suddenly a black cloud will appear. बीच में एक काला बादल आएगा। रडो नाका कितें घडलें म्हणून Do not cry what happened. क्या हुआ बोल के मत रहो। ते काळे कुपाक For that black cloud. इस काले बादल को जेजूचे नांवान In the name of Jesus you stand. यीशु मसीह के नाम से फूंक मार दो। हे खरें सत This is the truth. और ये सत्य है तुम्ही व्हडलें कोत्ता You do that a big thing. और उसे आप बड़ा करते हैं। हांव डेली मरतां Pastor says every day he suffers those things. ना साफर न्हू डायिंग Pastor says he daily dies. पास्टर कह रहे हो हर रोज मरते हैं आनी सदांच म्हाका नवो कोत्ता देव And always God makes him new. और परमेश्वर हमेशा उनको हर रोज हे नया खरें बनाता सत And this is the truth. है। और ये सत्य है, सदां म्हजेर मरण आसता Pastor says always there is death upon pastor. हर रोज उन पे मृत्यु रहती है। पूण मरणाकीन दोबरादार म्हाका नवें जिवीत दिता But twice that life is given to him. मृत्यु से ज्यादा उनको जीवन मिलता है। कित्याक हांवें तेका वळखला Why? Because he has known him.
क्योंकि पास्टर उसे जानते हैं, ताणे म्हाका विचून काडला, because he has chosen our pastor. क्योंकि उसने पास्टर को चुना म्हाका है, मोलादीक केला He has made him precious. पास्टर को मूल्यवान बनाया है, आनी मागण्याचो येवत बेडूक ताणे म्हाका पाद्री केला. And he has made him the priest to offer the sacrifice Praise of praise.